Welcome all members. Myself Anushka Mandal from Management System Consultancy. Today we will discuss the topic of OH&S Management System Standard as per ISO 45001-2018 version. ये किसका ऊपर आधार है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. सो हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड होता है, इस सबसे इंप्लीमेंट किया जाता है. दैट इज द discussion point of today's topic. So first of all, we will discuss upon the ISO. What is ISO? ISO क्या है? ISO is the acronym of International Organization for Standardization. It's a worldwide federation of national standard making bodies. किस टाइप का है फेडरेशन ऑफ बॉडी? मतलब जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जो इंडियन स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडीज है, दे आर ऑल्सो ए मेंबर बॉडी ऑफ ISO फेडरेशन बॉडी. सच टाइप और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एन्स USA, BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन UK, एफनॉर फ्रांस, डीन जर्मनी. इस टाइप का जो कंट्री वाइज जो स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडीज है, all are the member of the ISO. ISO is a non-governmental organization established in the year of 1947 in Geneva, Switzerland, and a more than 160 countries का फेडरेशन बॉडी. जैसा हम लोग एग्जांपल दिए. The role of ISO is to integrate various standards on products, services, system operating in its member countries and bring out harmonized international standard in these areas which will be acceptable worldwide. That means से ISO 45000 जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं in 2018 version. So that is the published standard from ISO federation body, and that is equally valid for all are their member countries, means more than 160 countries, like as India and other sorts of countries. Okay, so that is the sound from ISO side. Now PDCA cycle a basically standard का बेसी है. PDCA cycle इसको एडवर्ड डेमिंग का इन्वेंशन है. दैट्स व्हाई ही वाज द जर्मन बेस्ड साइंटिस्ट. तो कोई कोई इसको डेमिंग साइकिल भी कहते हैं, कोई PDCA साइकिल भी कहता है. PDCA का मतलब है कि प्लान, डू, चेक एंड एक्शन. दिस इज द बेस ऑफ नॉट ओनली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, एनी सॉर्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड. कोई भी स्टैंडर्ड जैसे ISO 9000 हुआ, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14000 हुआ, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 50000 हुआ, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, और भी स्टैंडर्ड है. ऑल कोई भी स्टैंडर्ड का, मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड का, दिस इज द बेस ऑफ एनी स्टैंडर्ड. PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्शन. सो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का बेसिकली जो स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर है, हम लोग इसका साथ कोरिलेट करेंगे. कहाँ तक हम लोग को प्लान करना है, किस हिसाब से हम लोग कॉम्प्लाई करेंगे प्लान का हिसाब से. प्लान ऑपरेशन करने के बाद व्हाट विल बी द चेकिंग पैरामीटर्स, चेक कैसे करेंगे, एंड एक्शन प्लान कैसे लेंगे इफ देयर इज एन लैकुना. ओके, सो प्लान में जैसे आप लोग देख रहे हो, कॉन्टेक्स्ट इश्यूज, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स आर इन द प्लान. डू, सपोर्ट, इमरजेंसीज, ऑपरेशन कंट्रोल आर इन द डू पार्ट. चेक थ्रू इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू, मॉनिटर एंड मेजरमेंट, दैट इज अंडर द चेक. एक्ट में क्या है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, करेक्टिव एक्शन एंड नॉन कन्फॉर्मिटीज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, या प्रोसेस अप्रोच. प्रोसेस अप्रोच बेसिकली क्या होता है कि टू डिफाइन योर प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज समझिए कि you need to establish your own processes. There are several types of examples are there. आप खुद का प्रोसेस को थ्रू इनपुट टू आउटपुट तो थ्रू प्रोसेस करके आप किस हिसाब से डिफाइन कर सकते हो. देयर आर सेवरल प्रोसेसेस, ट्री डायग्राम, टर्टल डायग्राम, CPOC diagram. CPOC is the most simplest and very simplest one. This is supplier, SIPOC, supplier input, prospects, output, customer. So what will be the who are your suppliers, what will be input for your processes, what is the actual activity wise your processes,
what is the output of your process, and who will be your customers. In such a way, you can define your processes, which will be helpful to understand in a short form आपको process को जानकारी देने के लिए. So process of course is this such type of things. You need to establish your process. Now types of processes. Basically, in any operation or any कोई भी industry कोई function में there are three basic types of processes. Management process, जिसमें planning, organizing, staffing, leading, controlling. Operational process, customer oriented process, जो new product development, manufacturing, logistics, distribution, and support processes. There's IT function, finance, human resource, and other sorts of processes are the support processes. This is what your information. Now, ISO 45000 ka, this is the history, means revision history. In the year of 1996, first guidance to occupational health and safety standard they have published. And on that time, जो occupational health and safety standard ये था, ये basically BT standard का property था, BT standard institution. 2007 में next revision आया, OHSAS occupational health and safety assessment series 18001 2007 version. That is released by this BT standard institution. 2013 में ISO proposed ISO 45001 एक conversion लेने का process start हुआ 2013. Finally, 2018 में in the March 2018 ISO published the final standard. BSI से conversion लिया ISO. So that's why we have called as a ISO 45001 2018 version. That is the latest version of occupational health and safety management system. Now this is the high level structure. Hope you all knows कि हम लोग का high level structure में किस हिसाब से structure को follow किया गया है. Basically after 2015 onwards, 2015 का बाद से कोई भी standard जो revision लिया है, they are follow the high level structure basically. 1 to 10 number of clausal requirements. Scope number 1, 2 normative references, 3 terms and definition, 4 context of the organization, 5 leadership, 6 planning, 7 support, 8 operation, emergency preparedness, 9 performance evaluation, 10 is the improvement. Basically 1, 2, 3 is the support to understand the your standard, basically scope, normative reference, terms and definition to understand the standard. Actual में 4 to 10 is the actually implemented or auditable clauses. So we will focus on the basically 4 to 10. Yes, this is the structure for same structure for applicable for ISO 45000 2018 standard occupational health and safety management. This is bit important because standard को पढ़ने के लिए आप लोगों को इस कोड को जानना जरूरी है, जो verbal terms जो indicate किया गया है. Basically shall indicates a requirement. Standard में जहाँ पे shall उसका बाद से जो दिया हुआ है, that is the basically requirement, or that to be implemented or that to be audited. Okay, and other sorts of things are also been there, like as should indicates a recommendation, may indicates a permission, can indicates a possibility or capability, note a guidance, clarification on the requirement, note to entry, addition information, but supplement the terminology. Yes, now this is the context of the organization, means clause number 4. So context of the organization में नीचे देखिए सब clause में क्या क्या है. 4.1 define the organization and what can affect it. So आपको organization अंदर में क्या क्या issues है, international issues जो हम लोग coming में देख रहे हैं उसका elaborately, that is under the clause number 4.1. 4.2 में क्या है, understand the needs and expectations of workers and other interested parties. 4.3 scope. 4.4 basically process approach. Yes, that is the thing. Understand the organization and its context. इसका अंदर में बोल रहा है कि बोला जा रहा है कि occupational health and safety related what are the internal and external issues that to be determined by the organization. कोई भी function, कोई भी activities में what is your issues related to occupational health and safety management system, that to be determined by the organization. So आप jot down करो आपका फंक्शन में हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड क्या क्या इशू है,
कुछ इंटरनल इशू, कुछ एक्सटर्नल इशू। इंटरनल इशू में हो सकता है जैसे वर्कर्स का पीपी रिलेटेड कोई इशू, दैट इज द इंटरनल इशू। एक्सटर्नल कुछ लीगल लाइसेंस रिलेटेड, कोई आउटसाइडर पार्टीज से विलेजर्स, उसका कुछ इशू है, तो दैट विल बी considered as external issues. So in such a way, you have to determine the internal external issues. Yes, some examples are being there. What are basically under the external, what is basically the internal issues. Now, understand the needs and expectation of interested parties. इशू जानने के बाद हम लोग को जानना होगा कि इंटरेस्टेड पार्टीज जो आपका साथ संबंधित है उसका क्या क्या नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम योर साइड। इंटरेस्टेड पार्टीज, ऑल पार्टीज, उसके बाद रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज, रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या है आपको जॉट डाउन करना है। सो टू थिंग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4.1 में क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज। 4.2 में क्या है कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। 4.3 इज बेसिकली स्कोप ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। आपको ये डिफाइन करना होगा व्हाट इज द पेरिफेरी, कौन सा बाउंड्री के अंदर में आप ये स्कोप ले रहे हो, कहाँ पे आप लोग ये मतलब एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड, कहाँ पे आप लोग ये इंप्लीमेंट करोगे। दैट इज बेसिकली द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम दैट टू बी डिटरमाइंड अंडर द 4.3. 4.4 ऑलरेडी डिस्कस्ड, बेसिकली इज द प्रोसेस अप्रोच। सो सिपो डायग्राम का हिसाब से हम लोग पूरा प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं अंडर 4.4, दैट इज द क्लॉज ऑफ रिक्वायरमेंट। नाउ 4, सो एज प्लान बिफोर कि हम लोग जब देखे पीडीसीए साइकिल का, सो पी मतलब प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 4, जो हम लोग क्या क्या डिटरमाइन किए इश्यूज को, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट पार्टी को हम लोग डिटरमाइन किए, उसके बाद स्कोप डिफाइन किए एंड प्रोसेस अप्रोच डिफाइन किए। ये प्लानिंग चल रहा है हम लोग। 5.1 बेसिकली लीडरशिप एंड कमिटमेंट। दिस इज जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का क्या क्या कमिटमेंट होगा, दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द लीडरशिप। Then another thing is of course there, that is very much vital कि आपका policies definition, occupational health and safety policies that to be established from management side. यहाँ पे क्या है कि 5.3 में बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। पॉलिसी डिफाइन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन मतलब टॉप मैनेजमेंट विल डिफाइन ऑर्गेनोग्राम एंड रेस्पेक्टिव पर्सन्स और स्टाफ्स roles, responsibilities and relevant authorities, of course related to occupational health and safety management system. Yes, so basically 5 का अंदर में क्या क्या हम लोग देखें, जनरल कॉन्सेप्ट, देन पॉलिसी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, उसका कम्युनिकेशन एंड लास्ट में 5.3 में है आपका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज। Now 6.1, 6 is basically called the planning, it itself called the planning. So planning start हुआ था 4 से, then 5 मैनेजमेंट ने उसका बाद क्या किया कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट किया, पॉलिसी डिफाइन किया, कम्युनिकेट किया एंड उसका कमिटमेंट होने पाया। उसका बाद एक्चुअल प्लानिंग मतलब स्टार्ट हो रहा है 6, जो आप देखिएगा क्लॉज में लिखा हुआ है 6 इज द प्लानिंग। प्लान में पहला, इट इज द हार्ट ऑफ द क्लॉज, बेसिकली कोई भी स्टैंडर्ड का हार्ट 6 ही है, प्लानिंग में लिखा जाता है। एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना होगा। सो व्हाट वे, कैसे आप करोगे, यहाँ पे जो दिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर इश्यूज रेफर्ड इन 4.1 एंड 4.2, इंटरनल एक्सटर्नल इशू एंड नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी को जो रिक्वायरमेंट है, that is the basically input for the doing the risk and opportunity analysis. Okay, now second word is also this one vital. So पहला रिस्क अपॉर्चुनिटी हम लोग किस हिसाब से किए कि जो इश्यूज एंड नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है उसी हिसाब से हम लोग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किए। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी इज द एक्टिविटी वाइज क्या क्या हैजार्ड, उसका साथ साथ रिलेटेड रिस्क क्या है, that is to be identified under the 6.1.2 clauses. उसमें कुछ छूट नहीं है, आपका जो जो एक्टिविटी है हर एक्टिविटी के साथ क्या क्या हैजार्ड है
उसका साथ रिलेटेड एक्टिविटी माने रिस्क क्या है, that to be under by hazard identification and risk assessment under the 6.1.2 risk clause का। से height work is the of course the activity। height work करने के बाद कोई अगर गिर गया, that is the risk। So in such a way, in each activity wise, you have to determine the hazard identification and assessment of risks। Yes, so this is the thing, assessment of OHSR risks जो हम लोग डिस्कस किए, same clause। Now determination of legal requirements or other requirements, occupational health and safety related क्या क्या legal provision है that to be determined। आपका अगर फायर रिलेटेड हो सकता है, फैक्ट्री लाइसेंसिंग हो सकता है, फैक्ट्री एक्ट का अंदर में क्या क्या प्रोविजन है, ऑल आर अंडर द लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, दैट टू बी डिटर्मिनेशन ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये आप लोगों को जॉट डाउन करना। नाउ प्लानिंग एक्शन में क्या है कि रिस्क असेसमेंट किए, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन किए, उसका बाद उसका रिलेटेड जहां जहां पे कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क जो आया उसका अगेंस्ट में हम लोग जो प्लानिंग करेंगे, दैट इज द अंडर द प्लानिंग ऑफ एक्शन। एंड दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, जहां पे हम लोग कुछ रिड्यूस कर पाएंगे। रिड्यूसिंग कुछ ऑप्शन है, दैट इज टू बी सेट एज ए ऑब्जेक्टिव। जैसे क्या है कि पास्ट ईयर में देखा गया कि देयर आर 2 फैटल्स, फिर आपका फर्स्ट एड टाइप का इंसिडेंट हुआ था 5 की 6 जो भी है, तो दैट इज रिड्यूशल ऑप्शंस। तो हम लोग इस ईयर हम लोग ऑब्जेक्टिव लिए 0 एक्सीडेंट, 0 फर्स्ट एड को हम लोग करने नहीं देंगे। सो दिस इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग जहां पे रिड्यूस ऑप्शन होगा। ओके, नाउ प्लानिंग नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव सेटिंग तो किए, किस हिसाब से ऑब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लाई करेंगे, अचीव करेंगे किस हिसाब से, दैट इज द क्लॉज आर रिक्वायरमेंट। what will be done, what resources will be required, who will be responsible, when to be completed, how measure the indication objective को measure करेंगे। So they, in that way you have to action plan करना होगा against the set objectives, कैसे उसका ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। रिसोर्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसमें, टूल्स, टैकल्स, मशीनरीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या रिक्वायरमेंट है अगेंस्ट द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज द अंडर द 7 क्लॉज का 7.1। 7 इज बेसिकली सपोर्ट, जो क्लॉज का हिसाब से एनेक्स का सपोर्ट है। 7.1 में रिसोर्स रिक्वायरमेंट। 7.2 इज द कॉम्पिटेंस, मींस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड कोई भी पर्सन का पहले कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स, उसका एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल, व्हाट इज द स्किल ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड, दैट इज अ स्किल मैट्रिक्स एंड रिलेटेड ट्रेनिंग, जो हमको ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन एंड ट्रेनिंग एवोल्यूशन रिकॉर्ड्स करना है, दैट ऑल अंडर द 7.2 क्लॉजेस। 7.3 इज वेरी मच वाइटल, अवेयरनेस, पॉलिसी अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन जो है उसका रिलेटेड हैजर्ड अवेयरनेस, ये सब का अवेयर करना, दैट इज अंडर 7.3। एंड कम्युनिकेशन किस हिसाब से करोगे, इंटरनली या एक्सटर्नली, बोथ वे, किसको करना है, किस हिसाब से करना है, व्हाट मीडिया किसको करना है, डिस्प्ले करना है, मेल करना है, किस हिसाब से, दैट टू बी डिटरमाइंड अंडर द कम्युनिकेशन, इंटरनली एक्सटर्नली, इन बोथ वे। ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, दिस इज वेरी मच वाइटल। तो अप टू 7 तक जो था, दैट इज द पीटीसीए का पहला पी, मतलब प्लानिंग। सो देखिए एक चीज, जापानीज जर्मन कॉन्सेप्ट, सो हाउ मच लेंथी इज द प्लानिंग, माने प्लान पुख्ता होना चाहिए। 4 to 7 इज द प्लानिंग। प्लानिंग का बाद से जो आउटकम आया उसी हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे। सो ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल बेसिकली देखिए, इंप्लीमेंट कंट्रोल इन 6 क्लॉज नंबर 6, मतलब हम लोग जो रिस्क अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस किए, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन किए, वहां से कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क है, उसको अगर आपको मैनेज करना का होगा किस हिसाब से, थ्रू ओसीपी। मैनेज कैसे करते हैं, थ्रू ओसीपी से। यहाँ पे एक हाइट वर्क है, उसको मैनेज करोगे, एक्सीडेंट ना हो, कैसे हिसाब से करोगे, हाइट करने, वर्क करने का टाइम क्या, व्हाट इज द स्टेप्स टू डूइंग ए हाइट वर्क, दैट इज अंडर द, उस हिसाब से आपको एसओपी सेट करना होगा, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेशनल प्लानिंग, establishment of the OCPs and managed through OCPs. Yeah, that is the another 8.4. Yes, now moving forward, elimination of the hazard and
रिड्यूसिंग OH&S सेम आपको एक वहां से भी जो आउटकम आया उसको भी आपको थ्रू ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल से रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा, मैनेज करना होगा उसको, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है, ओके, दैट इज देयर एंगेजमेंट, देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया, कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेजमेंट में आता है। So that is the 8.1.4.2 contractors management में आएगा। Emergency preparedness and response plan 8.2, this is basically जो emergency कुछ consideration है उसको लेके हम लोग को what will be the basically emergency का response का टाइम किस हिसाब से हम लोग response करेंगे, that is called the emergency preparedness and response plan and related mock drills। periodical way में हम लोग को प्लान को मॉक ड्रिल का हिसाब से हम लोग को देखना होगा हाउ मच वी आर अवेयर और हाउ मच वी आर रिएक्ट ऑन द इमरजेंसी, दैट इज अंडर द मॉक ड्रिल सेक्शन। नाउ डू पार्ट इज खत्म, उसके बाद परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एनालिसिस, हम लोग जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्लायंसेस हम लोग किस हिसाब से करेंगे, जो हम लोग डिटरमाइन किए थे, जो मेरा लीगल प्रोविजन है उसको सही से हम लोग कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहे थ्रू इवोल्यूशन ऑफ कंप्लायंस, वो हम लोग को देखना होगा। जैसे फैक्ट्री एक्ट का अंदर में कितना सारा प्रोविजन है, सो हम लोग उसको कंप्लाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, दैट इज द इवोल्यूशन, हमको इवोल्यूट करना होगा थ्रू रिव्यू, ओके। नाउ इंटरनल ऑडिट, पीरियोडिकल में इंटरनल ऑडिट टीम जाके ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के सिस्टम से इंटरनल ऑडिट करके उसका कुछ ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर काम करना, नॉन कन्फर्मिटी है उसको काम करना, दैट इज द इंटरनल ऑडिट प्लानिंग का हिसाब से, okay, that is the under the internal audit plan, schedule, internal audit report, management, अगर कुछ non-conformity है उसका action plan, that is the under the 8.2 clause का 9.2 9.3 management review after completing the internal audit report, हम लोग management को पेश करेंगे, these are all the outcomes, objective outcomes क्या है, so overall management review outcome में top management will review the all the sorts of things, that is called the management review। Now last clause improvement, अगर कोई इंसिडेंट है, कोई नॉन कन्फर्मिटी है, उसका अगेंस्ट में क्या एक्शन होगा। सो इंसिडेंट, नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। कोई इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई नॉन कन्फर्मिटी हुआ है, थ्रू ऑडिट हो सकता है, कोई प्रोसेस फेलियर हो सकता है, एंड उसका रिलेटेड एक्शन प्लान। करेक्टिव एक्शन में क्या है, देयर आर फ्यू स्टेप्स आर देयर against any non-conformity, against any incident, what is the immediate correction is required, so correction is the first step, then root cause analysis, then related corrective action. If any further precaution is required, means any preventive action is required, that to be through risk assessment, that to be in a cyclic way, that to be included in the risk assessment. So actually preventive action concept यहाँ पे नहीं है, that to be included in the risk assessment way. That is the cyclic way of the standard PTCA cycle. Okay. Now continual improvement through objective का आउटकम क्या है, ओके okay. बेसिकली यही होता है आपका continual improvement का आउटकम, जो आपका ऑब्जेक्टिव सेट किए थे ऑब्जेक्टिव का आउटकम, ठीक है। यानी OHSAS परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट हम लोग किए, दिस इज द continual। तो दिस इज द बेसिकली क्लॉज का रिक्वायरमेंट वाइज हम लोग और भी वीडियोस लेके आएगा, पर्टिकुलरली से हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है और अपॉर्चुनिटी एनालिसिस कैसे होता है, इसका ऊपर पे हम लोग वीडियोस लेके आएंगे। वीडियोस अच्छे लगते हैं, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड लाइक इट, सो प्रमोशन के लिए। और वेबसाइट एड्रेस इज गिवन ओवर देयर, मेरा एड्रेस आल्सो बीन गिवन ओवर देयर along with our contact number, you can directly contact with us, okay। So thank you all, thank you for the time being, bye।